आनंद लीलामय विग्रहाय यमवतिक सवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तत्व कांचन गौरांगी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसीदेवप्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय तुलापुष्पं विष्णुपादस्पृशतशिशिमात् भक्ति वेदांत रमण ऋषि महाराज श्री चरण सरोजे दास शिक्षा गुरुपाद पद्म तुलापुष्पं विष्णुपादस्पृशतशिशिमात् भक्ति वेदांत नारायण ऋषि महाराज श्री चरण कमल दास तत्पश्चात श्री क्षत्रिमंडली मातृबिंदु। क्या बताऊं प्रभु जी? Maharaj is asking what should I speak. He asked me to translate, so I am translating. आपने बोला ट्रांसलेट अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी में, तो अभी आप जो प्रश्न पूछा मैं वही पूछ रहा हूँ इन लोगों से। हाँ, तो फिर क्या आंसर आया? हाँ, महाराज इज वेटिंग फॉर योर आंसर. What should he speak? What do you want to hear from? How to get more attached to श्री गुरु के प्रति कैसे हम ज्यादा आसक्ति हो सकते हैं. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले हम लोग का गुरु कौन है, उसका अधिकार किसे है, वो जानना चाहिए. First we should understand who Guru is and what Guru is and what the qualifications of a Guru is. This we should understand. शास्त्र में कहा गया ब्रह्मा जी गुरु है, विष्णु गुरु है और शिव जी भी गुरु है. It is said in the scriptures that Brahma is also Guru, Vishnu is also Guru and Shiva is also Guru. और चौथा नंबर एक गुरु भी है, वो है परब्रह्म. And there is also one more in the fourth number, that is Parabrahma, who is also a Guru. तो परब्रह्म जो गुरु है वो है कृष्ण भगवान. This Parabrahma who is Guru, that is the Lord Sri Krishna. तो तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. तो जो परब्रह्म कृष्ण का चरण सान्निध्य जाने का तरीका और लेकर वहां पहुंचाते हैं, वही है हमारा लिए सद्गुरु. One who has realized the Lord's lotus feet
and who can take us to the lotus feet of the Lord, that is the only person who can be considered as Sri Guru. और शास्त्र में कहा गया सर्वश्रेष्ठ जो भजन है वो है गुरु सेवा. And in the scriptures it is said that which is the topmost seva, that is Guru Seva. लेकिन गुरु क्या चाहता है वो जानकर के उनको हृदय का जो भाव है वही जो शिष्य पूर्ण कर सकते हैं वही असल सेवक है. And to know exactly what the Guru's desire is and what is there in his heart, and one who can make out this desire that is there within the heart of Guru, he is the actual disciple. और हमारा गुरुवाष्टक एक है, उसमें हर प्रकार भाव का प्रकाश किया. जैसे है जो संसार दावानल से हमको परित्याग करेगा उसका गुरु माना गया है. संसार दावा नलो नीढ़ो लोक, तो इसमें जो है तो ये दावानल इससे जो हमको निकाल करके भगवान का सेवा भी नियुक्त कर सकते हैं वही है सद्गुरु. And the definition for the word Sadguru is the one who can save us from this forest fire. That is, we sing every day morning, Samsara Dhavana Lalali Dalo. The meaning of that is the forest fire. The forest fire will be very difficult to escape. So one who can save us from this forest fire and who can give us shelter at the lotus feet of that Lord, that is Sri Guru. ये जगत में जो भगवान का सेवा प्रकाश करता है और वो सेवा में अपना शिष्यों को नियुक्त करता है उसका सदगुरु कहा गया. One who manifests the seva towards the Lord. Understand this point. One who manifests the seva of the Lord in this world and who engages his disciples in that seva, that is Sri Guru. सेवा दो प्रकार का होता है. एक इस जगत में इस शरीर से होता है और एक मन से पर जगत में राधा गोविंद का सेवा गुरु जी का कृपा लाभ करे तो कर सकते हैं. There are two kinds of seva. One is serving from this material body, and the other is serving the Lord by the mercy of Sri Guru, serving the lordships, that is both the conjugal lordship, meant by mind or by mental level, by the mercy of Sri Guru. गुरु जी का दो प्रकार बॉडी होता है. एक ये जगत में शिष्य का कृपा करने के लिए
आचार्य रूप से विराज करता है, वो ये जगत में सेवा शिक्षा प्रदान करते हैं। और दूसरे है गोविंद लीला में उसका दूसरे रकम का रूप होता है, और वहाँ गोविंद लीला में नियुक्त है। जो योग्य शिष्य होता है उसको भी वहाँ नियुक्त कर देता है। Sri Guru has two roles, who performs one kind of seva with his material body and engages his disciple in that seva, and at the same time he is also in his transcendental form, he is serving Radha Govind, and that disciple who is fortunate enough, for such disciple the Gurudev also engages that disciple in that seva. सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रयी तद्भावो लिप्सना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। तो यहाँ का जो शरीर है पंचभौतिक शरीर, इसमें साधक रूप कहा जाता है। और साधक देह में श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन बंधन आत्मनिवेदन जो नवविधा भक्ति करता है। तो ये है साधक रूप से करने के लिए। लेकिन मन से भी दूसरे प्रकार हो सकता है, उसका सिद्ध अवस्था माना जाता है। वो चाहिए है, क्या है न ब्रजवासी से रूप से राधा गोविंद को सेवा करते हैं, वो सेवा कैसे हमारा मिलेगा वो जानकर अपना मन से उस सेवा में नियुक्त होना, ये सिद्ध रूप का विशेष सेवा पद्धति और गुरुजी का शिक्षा है। There are two kinds of seva. One seva is doing from this body, which is material by nature. As long as we are in this body, we are performing the seva in the form of a sadhaka. That sadhaka means the practitioner. The practitioner has certain seva he has to perform, which is called as Navavidha Bhakti, like Shravanam, Kirtanam, विष्णु स्मरण। Vishnu Smaranam. सही बोल रहा हूँ? हाँ चलते रहो। Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, like that there are 9 limbs of bhakti that is done with this body as a sadhaka, that is the practitioner. This is one kind of seva. There is one more kind of seva which is and which can be done by that devotee who is fortunate enough to receive that kind of mercy from his guru, who can do that seva with his mind, but he has to be realized that his Swarupa. Once he has realized his Swarupa, then he can do that kind of seva from within his mind, which is like a transcendental service to the Lord. सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न किया था, मैं कौन हूं? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो जीव का स्वरूप और जीव का विरूप, ये दो है हमारा यहाँ। विरूप है जो हम लोग सोचते हैं हम औरत है, हम पुरुष है, हम पशु है, पक्षी है।
हम पेड़ है, पत्थर है, ये सब जीव का स्वरूप नहीं है, ये हमारा विरूप है, रूप का विकृति भाव है। और स्वरूप में क्या है? हम कृष्ण का दास है, कृष्ण का दासी है। Sanatana Goswami asked Sri Chaitanya Mahaprabhu, who am I and what is my relationship towards you, towards the Lord? And Mahaprabhu who am I? So Mahaprabhu answers, there are two. One is Swarup and the other is Virup. Virup is we identify falsely ourselves with this body, like I am male and female, and there are like birds and bees, and there are like trees and rocks, like that. But that is Virup. We are not this body. But we are not that. But actually, the Swarup is, I am the eternal servant of the Lord. That is the actual Swarup. And whatever we are thinking now, that I am this body, and I am this, I am that, all this is Virup. So, we have these two things. One is Swarup and the other is Virup. भगवान कृष्ण का चार पाद विभूति है। एक पाद में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है और त्रिपाद में वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन ये सब है। तीन शक्ति प्रधान है, जीव शक्ति, शिव शक्ति और माया शक्ति। जितना करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, इसका परिचालना दायित्व माया शक्ति है, वही करता है। करोड़ करोड़ वैकुंठ है, वहाँ शिव शक्ति परिचालना करता है। जीव शक्ति दो जगत में परिचालन क्यों होते हैं? जीव शक्ति दो जगत में, वो जगत में भी है और ये जगत में भी है। जीव शक्ति ना रहे, ना चित शक्ति काम चले, ना माया शक्ति का काम चले। जीव शक्ति इधर भी है, वहाँ भी है। हाँ, मतलब वहाँ का जीव अलग है और यहाँ का जीव अलग है। अलग नहीं है, हाँ। एक ही है, एक ही शक्ति से पैदा हुआ जीव शक्ति। हाँ। लेकिन जो इधर आ गया, उसका ये पंचभौतिक बॉडी मिल गया, उसका बद्ध जीव कहा गया, कृष्ण भूल गया। उधार जो गया, उसका चिन्मय बॉडी मिल गया, नित्य, उसका नित्य पार्षद भक्तो ये सब माना जाता है। The Lord Sri Krishna has विभूति कहाँ? चार विभूति। He is having 4 kinds of vibhuti. He can create millions and millions of universes. That is one kind of his vibhuti. And he can create many Vaikunthas. That is one more vibhuti. And he is also having 3 Shaktis, 3 kinds of potencies. Understand? 3 kinds of potencies. One is Chitta Shakti, one is Maya Shakti, and one is Jiva Shakti. Chit Shakti means complete consciousness, and Maya Shakti means that we are in the illusion, and Jiva Shakti means from that which all these life forms comes. So this Jiva Shakti, without this Jiva Shakti, there cannot be that millions and trillions of universes or this Vaikuntha, because this Jiva Shakti is the one
which is there either in this material universes or in this Vaikuntha. It is there in both the places. Without this Jiva Shakti, there cannot exist this material universes and spiritual Vaikuntha. And this Jiva Shakti, what is one more that point Maharaj said? Here it is called Jada. No. Here it is called Jada. नहीं, not महाराज आप लास्ट में और एक पॉइंट कहा कौन सा? इसका जो जीव शक्ति वहां भी होगा यहाँ भी होगा। हाँ। और बात that जीव शक्ति, that from that जीव शक्ति those lives which came, those who were fortunate enough, they looked towards spiritual world Vaikuntha, they went there. They are called as Nitya Parshad, who are eternally liberated. And those who turned towards these material universes, they are called as Nitya Baddha. Baddha means, not Nitya Baddha. Baddha means conditioned, like we are in this world. समझ में आता है तेरे लोग का? Maharaj is asking, are you able to understand? Are you able to follow what Maharaj is speaking with this English translation? Maharaj perfect कहा. तो जो चार बोला है, तो वहाँ का जो तीन है, अशक, अभय और अमृत। असत, अभय, अभय और अमृत। हाँ, वहाँ का तीन। हाँ। और यहाँ का संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोध नक्ष मक्ष कबलितस्य दुर्वासना निगड़तस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्र यदि नाद्रम कृपां करोषि। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। बोले यहाँ का एक पद कैसे है? वहाँ का तो असर अभय अमृत है, आनंद आनंद है। यहाँ का एक पद क्या है? नहीं, संसार दुख जलाब्धु, दुख का समुद्र है और हम इसमें गिर गया समुद्र में। तो समुद्र में क्या रहता है? नक्र और मक्र, हंगर और कुम्भी। तो वो हमको पकड़ लिया। दूसरे दुर्वासना निगड़तस्य, निगड़ मतलब रस्सी, और दुर्वासना से हमारा ऐसा बांध दिया। दुर्वासना मतलब दुर्वासना मतलब भोग वासना। दुर्वासना मतलब जो वासना हम कृष्ण से दूर कर ले जाता है। हाँ, दुर्वासना मतलब जो वासना होने से हमारा दुर्अवस्था हो जाता है। हाँ, दुर्वासना कोटेशन बहुत है। हाँ, तो ये है दुर्वासना। और दूसरे क्या है ना? नक्र मक्र तो लिया, दुर्वासना से हमारा हाथ पैर सब बंधा हो गया। इतना गहरा है, पेड़ नहीं लग रहा है बीच में। गहरा मतलब डीप, पानी का, समुद्र का, दुखों का पानी का डीप। और निराश्रय है, कोई आश्रय नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। निराश्रय मतलब क्या है? कोई हेल्प करने वाला यहाँ नहीं है। इस अवस्था में एकमात्र चैतन्य महाप्रभु यदि हमारा कृपा करे तो हम ये दुर्दशा से उद्धार हो जाए। चार पद मतलब क्या होता है? पद मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पद? और मान लो, सुनो, हमारा इधर देखो, मान लो तुम्हारा ट्रांसलेट किया नहीं, हमारा 4 रुपया है, मान लो ऐसा। तो 4 रुपया है, 4 रुपया से 4 काम हो रहा है।
तो 1 रुपये का काम है आनंद, 1 रुपये काम है अशोक, माने शोक रहित होना, शोक दुख नहीं है। और तीसरा उपाय भय, अभय, निर्भय। और दूसरे ये है वैकुंठ जगत में। और ये जगत में जो एक पद है इसमें 6 काम होता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्षुधा, पिपासा। यहाँ का जो एक पाद विभूति है इसमें 6 काम करता है। वहाँ 3 पाद विभूति में तो एक विभूति एक काम करता है, यहाँ एक में 6 काम कर देता है। लेकिन हर काम गहरा काम, बड़ा बुरा काम है। जन्म भी बुरा है, मृत्यु कौन अच्छा बोलेगा? बोलेगा कोई? मृत्यु अच्छा है बोलेगा तो नहीं कोई। खुदा तो जा हो, जो हो रहा है तो सब पता चलता है क्या है, पेट का जाला जो आ जाए। तृष्णा मतलब हमारा अच्छा मकान हो जाए, अच्छा कुछ हो जाए, अच्छा औरत हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, ये सब जो जितना इच्छा है वो सब तृष्णा है। और जरा मतलब बार्धक्य दशा, कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। और लास्ट फिनिशिंग मृत्यु है। तो ये 6 जो है ना सभी कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है। तो हमारा भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, जन्म मरण जरा जे संसारे आचे भरा ताते की बा आचे बोलो सुख। उसमें क्यों घुस रहा है भाई? जन्म मृत्यु जरा, उसमें घुस मत। ये जगत माया का खेल में यही 6 चीज है, इससे ज्यादा नहीं है। और वो जगत में जन्म मृत्यु जरा नहीं है। समझ में आया? There are 4 things in that word. Out of that, 3 are abhay. That is, there is no anxiety and no fearful. And amrut, there is no mrityu. And one more, अभय, abhay, asat, it is eternal. Here we have, which is what is it? One thing which does six words. No. First, what Maharaj explained before that. Before this explanation, he told one more thing. This world is full of suffering. For in that suffering we have, as Maharaj said the shloka, samsara dukkha jaladau. We are in this world where there is only suffering. And what is that kind of suffering? We are in such a deep ocean where there is so many very kind of in that ocean we will find so many wild animals like crocodile, sharks, this, that. And what are they? It is durvasana. Durvasana means we have, vasana means we have so many impressions. Understand? Vasana means which are called as sanskara or vasana. It is which we have accumulated since time immemorial, like since many lifetimes. These vasanas are binding us. It has completely bounded us, and we are in that ocean where we are not able to find the bed of that ocean. We cannot find this, for every place there is a floor. Even in the ocean there is a place called a seabed. That is the floor of the sea. But this sea there is no bed at all. And these vasanas, they have completely bound us. And what is this durvasana? All vasanas that which is keeping me away from the service of Lord Shri Krishna. What is this vasanas? We have so many desires. I want this, I want that. Only want. Not Krishna. We have all these desires
keeping Krishna far away and only to fulfill our own desires. And what this will do, this will further entangle us more and more in this ocean, bottomless ocean. So this world is only filled with Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. And what is, दो क्या है हमारा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्षुधा पिपासा। खुदा मतलब क्या बोला? भूख लगना, हाँ? खाने का इच्छा, स्टमक जल रहा है, और जन्म हो गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो गया, खुदा और पिपासा। पिपासा मतलब पिपासा मतलब हमारा कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये जब कुछ चाहिए है। in this world there are 6 things which is binding us, that is which is making us to suffer in this world. What is that? Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Janma means birth, Mrityu means death, Jara means old age, and Vyadhi means diseases. And apart from this we have Kuda. Kuda means we only want to satisfy our senses. And Vipada. खुदा भूख लगना, और बाद में और एक पिपासा। Pipasa means we are always in the dream world. I want this, I want that, I want one big building, I want one big post, I want this one big car, I want big bank balance. All these desires, hankerings is Pipasa. And Vipada is enjoying tendency. Enjoying. So this world is with these 6 things. Other than these 6, there is nothing in this world. But there, in that world, there we don't find all these things, but we have Abhaya, that is Abhaya means fearlessness, and Amrit, there is no fear of death. And one more thing, Asat. Asat means that is eternal. This is Sat. Sat means there is a birth, there is a death. So this is the difference between that place and this plane. तो महाराज जी का टाइम होगा? टाइम 10 8:10। हाँ, हो गया महाराज? बस। तो जो गुरु ने ये सब चीज बताते हैं, बता करके माया दो जो महामाया हम लोग का दुख का कारण है, जोग माया हम लोग का आनंद का कारण है। जोग माया का अंडर में चले तो आनंद आ जाए, महामाया का अंदर में चले दुख और दुख रहते हैं। तो इसलिए जो गुरुजी ये 2 चीज शिष्य को अच्छे से समझा करके जोग माया का अंदर घुसा देते हैं, और जो शिष्य वही गुरुजी को मन प्राण से सेवा करते हैं, तो वही शिष्य है, शिष्य नाम का सफल कर सकते हैं। और जो गुरु शिष्य को भगवान का चरण में पहुंचा सकते हैं, उसका गुरु माना जाता है। बाकी शिव जी ने बोला है इसका कोई गुरु नहीं है, गुरु नामधारी है। बता दो। And now in Maya there are 2 things. One is Yoga Maya and the other is Mahamaya.
The Yoga Maya is that which will engages us in the service of the Lord and which will make our lives blissful, successful, and always eternal. But this Mahamaya is such that which will drag us away from the Lord and which will make us to be in the world of illusion and which will make us suffer always, suffering, and which will not allow us to get into that service of the Lord. So this is the two things. And now that personality who will teach us about this Mahamaya and who will teach us about Yoga Maya and who will take away from this Mahamaya and who will engage us or put us under Yoga Maya and who will take us to the lotus feet of the Lord, he is considered as Sri Guru. And that disciple who understands all this and who makes effort to go towards Yoga Maya, he is the true disciple. And Lord Shiva says, those who do not help their disciples in this way, they cannot be called as Sri Guru. ठीक है, समझ में आ गया? Understand? Understand? Maharaj is asking, understand? Yes. Guru and Shishya, Bhagavan and Maya. Mainly चार है तो हम बता दिया और इतना तक जाने और हरे कृष्ण करते रहे चल जाएगा, कोई चिंता नहीं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। Maharaj said, Guru and Shishya, the Lord and the Maya. So, Guru and Shishya, that is 1 and 2, and the Lord and Maya. So, together, four things. One who understands these four things and one who chants always Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare, he can be successful. There are two things, Guru and disciple. And one more is the Lord and Maya. Yoga or Maya? Yeah, Yoga Maya or Mahamaya. So one who understands the Guru and one who understands what a disciple is and one who understands what the Lord is and one who understands what the illusion world, that is Maya, is, after understanding all this, definitely he will chant qualitatively and he will continuously wants to do only chanting. Because if he knows these four things, he will not do any other thing. Because he wants to get out of this place. So, we should understand these four. What Guru is, what Shishya is, what Lord is, what Maya is. If you understand only those who have understood, they will chant. Otherwise, they will not chant. मैं ये बोलते हैं महाराज जी, जो गुरु क्या होते वो समझ गया और जो शिष्य क्या होते वो समझ गया और भगवान क्या होते और माया क्या होते, अगर ये चारों चीजों को जो समझेगा वो जरूर अच्छा से हरिनाम करेगा, नहीं तो और वो सारा हरिनाम शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे। और भगवान के पास पहुंच सकता है। क्यों? वो माया दो है, दोनों का कारखाना में क्या काम चलता है वो जान जाए तो एक में तो केवल काम करता है, वेतन देता नहीं, काम कराता है, वेतन देता नहीं, वेतन जो देता है उल्टा वेतन दुख। और जोग माया का कारखाना में भी काम करना पड़ता है, लेकिन महाप्रभु बोला है ना, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीव दास करी वेतन मरे देह प्रेमधन। गुरु जी का पास प्रार्थना करा तो प्रेम धन मिले तो जोग माया का कारखाना का काम मिल जाए
और प्रेम धन जिसका नहीं है उसका महामाया का कारखाना काम करना पड़ेगा। और महामाया का काम मतलब दुख से है, और जोग माया का काम मतलब आनंद आनंद है, राधा कृष्ण का साथ जो है। ठीक है। One who understands these four principles, he will chant and definitely he will go towards Yoga Maya. If one who is not understood these things, being a jiva, he should either be in two places. One is Yoga Maya and another is Mahamaya. If you have not understood what Yoga Maya is, you will be in Mahamaya. When you are in the Mahamaya also, because being the very nature of the jiva is to be active. Correct? So when you are active in the Maya, you are paid for your activeness. What is that payment? You will get only sufferings. Understand? But when you are active in Yoga Maya, and your payment for your activeness there is always premadan. You are joyful. So, knowing this, you decide what salary you want, what kind of payment you want. You want to have the payment which is only suffering, or you want to have the payment where there is premadan. So decide. Hare Krishna. Mancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. पूज्यपाद भक्ति वेदांत जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज।